Good morning, friends, and welcome to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. Amongst various other on-road issues being faced by the road transport industry, cargo as well as passenger, E-Challan probably figures on top of the list across India. You have officials of the transport department standing or probably hiding with their mobile phones to capture images of traffic violations. Many times, the images are captured in a way to make things look like a violation. And what is even more serious is that a truck in Maharashtra is booked for a violation in some other states. This is a common occurrence. Technology was introduced to find a way to bring down offences and make roads safer. However, it is being used now as a fund collection drive. Surprisingly, data reveals that only 4% fines were collected over a 3-year period, and Maharashtra alone has pending collection to the tune of Rs 5,000 crores. Naturally, Maharashtra was alarmed by the huge amount of unpaid challans and came up with an idea. Stop trucks, check for unpaid challans and demand money, failing which the trucks could also be seized by the department. In a competitive business scenario, transporters are looking to ramp up efficiency, but time and again, the department comes up with plans to derail this mission. Any which ways, transporters are dealing with no entry regulations in cities, and on top of this, you have further hurdles to movement during the hours of movement allowed. Transporters in Maharashtra had been taking up this with the department, but to no avail. After engaging in continuous dialogue with the government, the department finally issued a notification directing the officials to stop this collection and at the same time treat the drivers with respect. However, the larger issue of e-challans still remains unaddressed. Trans India caught up with two leading representatives of the industry, both representing the truck and bus segment respectively, and this is what they had to say on the recent developments in Maharashtra and the industry on the whole. First up, we have the President of All India Transporters Welfare Association, Ashok Goel, followed by Harsh Kotak, who wears multiple hats. He is the President of Mumbai Bus Malik Sangatana MMR region, the Vice President of Federation of Tourist Taxi Operators, and the Treasurer of Bus and Car Operators Confederation of India. Besides the e-Challan issue, Ashok Goel also speaks on the health of the overall industry, and according to him, the industry doesn't look in very good shape. On the other side of this very short break, Ashok Goel and his very honest opinions. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. Decades, Hippo set the benchmark for performance, a symbol of unwavering reliability and relentless power. From that legacy, a new force arises. Reintroducing the all-new Ashok Leyland Hippo, reimagined for the future. Across terrains, every pull driving ambition forward. Every motion uninterrupted, every force crafted from the ground up with purpose. Powered by a mighty 8-liter engine, the Hippo delivers unmatched fluid efficiency and reliability. To bend the road and beat the clock. Turning distance into gain and time into profit. The Hippo is made for the world's fastest growing economy, to push the wheels of progress forward. The all-new Hippo from Ashok Leyland, powered for progress.
terrain, strength is the first move. Through the cloud of dust rises a force of nature. Introducing the Ashok Leyland Taurus, engineered to dominate every terrain. Driven by purposeful design, Taurus delivers higher power with an 8-liter engine and best-in-class torque. When the terrain pushes back, Taurus pushes harder. Through the uneven ground, this truck surges with unmatched stability. Through tight spaces, the Taurus turns with ease. Comfort meets safety in this elevated cabin. Work doesn't wait for perfect conditions. Neither does Taurus. It's built to run longer, stay stronger. When the dust settles, this legacy of strength stands tall. The Ashok Leyland Taurus, built to conquer. Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. And here is Ashok Goel, National President, All India Transporters Welfare Association. अशोक जी, ई चलान इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा होते जा रहे हैं. हम जहाँ भी जा रहे हैं ई चलान की बात हो रही है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद ई चलान? बिकॉज हम एक तरफ कहते हैं कि हमको टेक का यूज़ करना चाहिए टू हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट्स, कंट्रोल ट्रैफिक. तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? गिरीश, जब ये ई चलान सरकार ने शुरू किया था, सो द पर्पस वाज कि भाई जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो हम बात करते थे भाई ब्राइबरी ऑन द हाईवेज़, उसको रोकना था. और ये था कि भाई अगर टेक का यूज़ करके करेंगे तो इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट. राइट. बट ओवर द ईयर्स इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ करप्शन, द ई चलान्स. हो क्या रहा है कि इट इज़ टोटली बीइंग मिसयूज्ड. ई चलान करने के जो तरीके हैं, इट वॉज सपोज टू बी लाइक एक आपका बॉडी कैमरा हो, 3 फोटोग्राफ्स हों, बेस्ड ऑन दैट द ई चलान वुड बी हेल्ड वैलिड कि हाँ भाई ये वायलेशन हुआ है. दिस वाज पार्ट ऑफ द नॉर्म्स. दैट्स पार्ट ऑफ द नॉर्म्स. मतलब इट वाज पार्ट ऑफ द नॉर्म्स कि भाई बॉडी कैम होना चाहिए पुलिस वाले के पास, और 3 फोटोग्राफ्स कम से कम हों. बेस्ड ऑन दैट वो चलान को वैलिड माना जाएगा. राइट. बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो क्या हुआ कि दे हैव स्टार्ट यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन. वो कहीं से भी फ़ोटो खींच के और वो भेज देते हैं. और ई चलान्स, अगर मैं सच कहूँ तो करीब 50% ई चलान्स आर फेक. मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप कुछ जगह तो ऐसे ही मिले कि आप हो पूना में और आपका चलान हो रहा है बॉम्बे में. करेक्ट. तो उस तरह, और आप फिर आपको फाइट करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिल रहा. इस तरह के ये हो रहे हैं. अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूँ, आपकी स्पीड लिमिट 80 है और वो अचानक 40 पे आ रही है, तो आप ड्राइवर को थोड़ा तो एक बेसिक साइन बोर्ड्स तो हों कि भाई आप स्पीड लिमिट आपको कम करें. तो थोड़ा एडवांस इन्फॉर्मेशन तो हो कि भाई हाँ भाई 1 किलोमीटर के बाद आपकी स्पीड लिमिट कम होनी है. ऐसे कोई प्रावधान नहीं कर रखा. तो ग्रेजुअल होना चाहिए. ग्रेजुअल होना चाहिए. हाँ, 50-40. इनफैक्ट आप यू विल बी सरप्राइज, एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन भी फॉल्टी है. एक लोकेशन ऐसे जहाँ 4 लेन से 2 लेन पे कन्वर्ट हो रहा है हाई एक्सप्रेसवे. तो ऐसे मुद्दे हमने उठाए थे कि भाई जो ई चलान है, वी आर नॉट अगेंस्ट ई चलान, वी आर नॉट अगेंस्ट लेजिटिमेट ई चलान्स, लेकिन जो फेक ई चलान्स हो रहे हैं उनको मतलब बंद किया जाए. जो बहुत, इट्स नॉट ओनली क्वेश्चन, बोले ऑल ओवर इंडिया ये अब होना शुरू हो गया है. मार्च महीना है, आई गिव यू सम एग्जांपल. राजस्थान में वी लिफ्ट आईसो टैंक कंटेनर्स आर इम्पोर्टेड और आपकी प्रॉपर है, उसके फ़ोटो खींच के ऑल्ट्रेशन टू बॉडी दिखा के 15,000 के चलाना है. मतलब नॉर्मल ट्रक है विच इज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड और उसके ऊपर टैंक अलग से रखा हुआ है और उसके फ़ोटो खींच के पेनल्टी लगाई जा रही है 10-10, 15,000 की. तो इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया है. ये इनके जो टारगेट्स हैं उसका पूरा करने के लिए कोई भी तरीके के ई चलान करें, तो दैट इज़ व्हाट वी आर फाइटिंग.
नंबर 2, अब जो ई चालान का हम और मुद्दा जो आ रहा है, इनफैक्ट एज अ लेमैन इवन यू विल बी अफेक्टेड। महाराष्ट्र में जो 1 जनवरी 2026 से जो नए चेंजेस उन्होंने किए हैं, उसमें यू विल नॉट हैव द राइट टू कंप्लेन ऑल्सो, आई मीन टू कंटेस्ट इट। अगर आपने 90 दिन तक ई चालान नहीं भरा तो योर राइट्स आर गॉन। 1 to 45 डेज है, उसके बाद अगर आपने नहीं पे किया या आपने कंटेस्ट नहीं किया, आफ्टर 90 डेज यू लूज द राइट टू कंटेस्ट, और आपको ई चालान भरना ही पड़ेगा। और आपने अगर नहीं भरा है, सो योर बाइक और योर कार और योर व्हीकल इट विल बी कॉन्फिस्केटेड। इतना ड्रैकोनियन लॉ है ये। तो अर्लियर द अथॉरिटीज वर सपोज टू गिव अ प्रूफ राइट कि यू आर एट फॉल्ट, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। इस तरह के लॉज आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक टू द गवर्नमेंट कि भाई ये जो चीज़ें हैं, आप अगेन वी आर ट्राइंग टू रिपीट कि वी आर नॉट अगेंस्ट ई चालान, बट वो ऐसे रैशनल करो ताकि सबके लिए ठीक हो वो। अब तो ये टोटल एक किस्म से, अगर मैं सच कहूँ तो इट इज़ नाउ बिकम अ रैकेट टू जनरेट इनकम। मुझे लग रहा है कि जो अभी सरकारें हैं वो ई चालान का पैसा अपने बजट में लेने लगी है कि हाँ साहब, अगर मेरा बजट है तो 4-5 हज़ार करोड़ तो मैं ई चालान से मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू कर लिया है। ईजी हो गया, ईजी हो गया। करना ही क्या है, बेसिकली ये था कि आपने रेट चालान के वो भी बढ़ा दिए, पेनल्टीज भी बढ़ा दी। तो ये था कि भाई आप सरकार जो रोड पे हाईवेज पे जो पेनल्टीज हैं वो कम होगी, एक्सीडेंट्स कम हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि सारे चालान्स या सारी पेनल्टीज अब ओनर पे आ रही है, ट्रक ओनर पे। राइट। अब अगर ड्राइवर कोई गलत काम कर रहा है या मान लीजिए सीट बेल्ट भी नहीं पहनी या और कोई कर रहा है, सो ड्राइवर इज गोइंग स्कॉट फ्री इन अ वे, क्योंकि आपको चालान SMS पे आ रहे हैं। बाय द टाइम यू रिसीव दैट ई चालान, आपको ये नहीं पता था भाई द ड्राइवर मस्ट हैव लेफ्ट। तो सारे के सारे ओनरशिप ई चालान के ट्रक जो ओनर ऑफ द ट्रक पे आ गए। तो अगेन दैट इज़ रॉन्ग। तो आपका एक मकसद होता है कि भाई जिसने गलती की है उसको सुधार करना। तो वो गलती तो ट्रक को तो पता है, ड्राइवर को तो पता है कि भाई मेरे पास कोई आईना नहीं है। सो जो कम होने चाहिए थे रास्ते में जो एक्सीडेंट्स या जो होना चाहिए, तो वो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। सो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म वेयर लेट्स से ड्राइवर हैज मेड अ मिस्टेक, या तो ड्राइवर के उस लाइसेंस पे ये आ जाए कि भाई हाँ भाई 3 बार अगर आप कहोगे तो ड्राइवर यू माइट लूज अ लाइसेंस, ताकि थोड़ा डेरेंट हो। वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारा मकसद ये था कि टॉक टू द गवर्नमेंट एंड डिस्कस कि भाई ये आपने मकसद आपका अच्छा था, बट वो मकसद सॉल्व नहीं हो रहा है और टोटल मिसयूज हो रहा है। टोटल मिसयूज हो रहा है, रादर डिफीट तो ही रहा, मिसयूज कंप्लीट मिसयूज। अब तो Before we get to what actually happened in the last week 10 days, as a company आपके पास भी ई चालान बहुत आते होंगे because you have a fleet. आप उसको कैसे ट्रैक करते हो, कैसे हैंडल करते हो? देखिए, काफ़ी कंपनीज अब आ गई हैं इंडिया में जो आपको ट्रैक करके दे रही हैं, एंड दे विल इन्फॉर्म यू कि ये जगह पे आपके वो हो गए हैं, एंड देन दे ऑफर यू अ सर्विस ऑल्सो, वेयर अगर मान लीजिए मेघालय है, सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि हम मेघालय जगह करेंगे, सो दे विल फाइट इट ऑन योर बिहाफ। और वो फिर चालान्स या तो आपके जो लोक अदालत है उसमें वो करा देंगे, या दे विल गो टू द कोर्ट और वहाँ पर जाके उसको मिटिगेट कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, एंड दे स्टिल स्ट्रगल टू पे द ई चालान। बट ऐसे एक नहीं 3-4 कंपनी में जानता हूँ जो ये चीज़ कर रही है, हैंडल कर रही है। नाउ कमिंग टू व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र लास्ट 10-15 डेज, हमारी गवर्नमेंट से डिमांड क्या थी? महाराष्ट्र में सबसे मेजर आपको बता दूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ द ट्रेड, ऑटो, टैक्सी, बसेस, टेम्पोज, ट्रक्स, सब के सब एक छत के नीचे आ गए थे। देयर वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से अराउंड 40 एसोसिएशंस जो एक छत के नीचे थे, और सभी का एक ही मेजर मुद्दा था ई चालान। राइट। अब हो क्या रहा है कि अगर आप मुंबई की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको बस वालों को देना चाह रहा हूँ। अब बस हैं जो स्टूडेंट्स को लेकर जा रही हैं, डेफिनेटली कोई अलाइट करेंगे। एब्सोल्युटली। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पार्किंग लॉट या सिंगल ऐसा है अलाइटमेंट करने के लिए कि भैया आप यहाँ से बच्चों को उठा सकते हो, यहाँ आप डेजिग्नेटेड स्पॉट्स कोई है ही नहीं। और आप जैसे रुकते हो, फोटो खींचा और आपका वो हो रहा है। तो सरकार को ये भी देखना है कि भाई जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से व्हीकल की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दे हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रॉपर पार्किंग लॉट्स। थोड़े प्राइवेट पार्किंग लॉट्स होने चाहिए, या थोड़ा ये इस तरह का भी ट्रक्स है मान लीजिए, देयर इज़ नो प्लेस के लोडिंग अनलोडिंग के लिए कोई उन्होंने जगह बना रखी है, भाई ठीक है आप इस जगह पे आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हो। तो सारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल हेवायर हो चुका है।
और आप मजबूरी में आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, वो ऐसी जगह करो जहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है, अगेन वो चालान हो रहा है। राइट। तो लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं और इतने ज़्यादा चालान्स हैं। अगर मैं बात करूं, एवरेज में एक व्हीकल पे करीब लाख रुपए के चालान पेंडिंग हो गए ऑलमोस्ट। मैं आज ही कोई डेटा देख रहा था, इट सेड कि अराउंड 4,000 crore rupees worth of challans are still unpaid in Maharashtra. महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। ऑलमोस्ट 4,000 crores ऑफ चालान्स आर नॉट पेड, और कई लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। राइट। तो इट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस फॉर व्हाट द E-Challan system was introduced. Right. So what was your demand to the government this time? So 2-3 demands. First of all, जो E-Challans सही नहीं है, एज आई मेंशन कि अगर 3 फोटोग्राफ्स नहीं है, राइट, दैट दे शुड बी बेनिफिट ऑफ, मतलब उनको देख लेना चाहिए भाई ये E-Challan गलत है। टेक्निकल ग्राउंड जो है, जो इलीगल है, अगर वो फोटो खींच के गया तो वो था। सेकंड वाज जो अभी ये जो चेंजेस गवर्नमेंट ने की हैं E-Challan में, जैसे मैंने बताया आपको 90 दिन के बाद आपको कोई राइट ही नहीं है, तो उस पर वो कैसे उसको ठीक किया जाए कि हाउ इट कैन बी दिस थिंग। ये सारी चीज़ों हम कोशिश कर रहे थे बात करने की। इनफैक्ट द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर सरनाइक हिमसेल्फ सेड कि नहीं, आप लोगों के साथ गलत हो रहा है एंड वी नीड टू वर्क आउट। इनफैक्ट उन्होंने मजाक में ये भी कहा मेरे कार पे भी E-Challan पेंडिंग है। तो सबको प्रॉब्लम पता है बट सोल्यूशन कोई नहीं निकल रहा। एंड द मेन रीज़न इज द रेवेन्यू। It's easy money for them. It's easy money for them. And as a layman, as a small person, as a trucker, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई डोंट हैव दैट मच पावर कि मैं सिस्टम के बगैर खड़ा हो सकूँ। और दैट वाज रीजन लोगों में इतना आक्रोश भर गया था कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र लोगों ने अब किया और इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और लोगों का आक्रोश दिख रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त है इससे। बट एंड ऑफ द डे, आफ्टर ऑल द एफर्ट एंड एवरीथिंग, इसका आउटकम क्या आया? देखिए, आउटकम कैसा है कि सरकार ने आश्वासन तो बहुत सारे दिए हैं कि भाई हम आपके ये प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने सरनाइक जी का बोला, अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक नाथ शिंदे जी वीडियो कॉल पे आ गए थे कि भाई हम इसको डेफिनेटली हम चेंज करेंगे। इनफैक्ट उसके बाद की मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत शायद उन्होंने किया भी है, जैसे टैक्सी परमिट्स उन्होंने बंद कर दिए, ऑटो परमिट बंद किए, बाइक टैक्सी के परमिट्स बंद कर दिए, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। तो छोटे छोटे तो इन्होंने हल्के फुल्के तो रियायतें दी हैं, बट जो मेजर E-Challan का जो था वो आज भी पेंडिंग है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 23rd को इनका सत्र ख़त्म होगा, तो मे बी उसके बाद शायद इसके ऊपर वो ये काम करें। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे पॉइंट्स हम 2022-23 से हमने सरकार के पास रखे हुए हैं। AMTC भी इन्वॉल्व है, BGT भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। फॉर एग्जांपल विदाउट क्लीनर वाला जो है कि क्लीनर शुड बी अबॉलिश्ड, ये पॉइंट्स बहुत सारे, और सोल्यूशन भी दिया हमने। खास बात ये है कि हम, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है, सो वी आर ट्राइंग टू गिव अ सॉल्यूशन टू द गवर्नमेंट कि भाई देखिए आप ये करोगे तो ये हो सकता है। एवरीथिंग इज इन प्लेस, बट फिर भी वो GR जो निकलना चाहिए अब तक नहीं निकला है। और जबकि 3 साल से लगातार करस्पॉन्डेंस, रेगुलर मीटिंग सब कुछ हो रही है, बट नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट। Why is it that the government doesn't listen to the road transport industry? Are we lacking somewhere, or is it that the government has become very arrogant कि हमको जो मनता है हम कर सकते हैं? सच बताऊं तो मुझे तो ये लगने लगा है कि सरकार को लग रहा है भाई हम जो चाहें कर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी बात होगी कि हम E-Challan की बात करें। देयर आर अदर सेक्टर्स वेयर वी आर ट्राइंग टू पुश द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम वी फेस इन ई-वे बिल, GST के जो लॉज हैं। ई-वे बिल तो मेरे ख्याल से बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। ई-वे बिल तो हमें ये लग रहा था कि ये छुटकारा मिल जाएगा, और इनफैक्ट हमने सरकार को बहुत अच्छे से समझाया था, एंड दे वर ऑल कन्विंस्ड कि भाई हाँ, आप लोगों की जायज़ डिमांड है कि ई-वे बिल में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ई-वे बिल पे भी ये हो रहा है कि जो ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे है, ही इज़ नॉट विलिंग टू लिसन एट ऑल। तो हमने उसमें बहुत मेहनत कर ली थी और पूरी तरह जस्टिफाई कर दिया। द बेस्ट पार्ट इज़ वी हैव अबाउट 80-90 कोर्ट जजमेंट्स इन आर फेवर, ओके, इन फेवर ऑफ द ट्रकर, कि अगर ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देयर शुड नॉट बी एनी पेनल्टी। राइट। हमने वो सारा रिप्रेजेंट किया है। भाई ई-वे bill was supposed to stop evasion of tax. That was the main purpose. That was the aim, correct. हाँ, अगर आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे, फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे से वापस जा रहे हो, सो द टाइम अलाउड इज ओनली 1 day. राइट। इन बिटवीन अगर आपकी गाड़ी पालघर में अगर खराब हो गई है, सो दैट पैच यू विल नॉट कम टू नो ऑल्सो, देयर इज अ नो मोबाइल फोन कनेक्टिविटी देयर, GPS भी काम नहीं करता। और अगर थोड़ी देर आप लेट हो गए और आपने 24 घंटे क्रॉस कर दिए और आपकी गाड़ी पकड़ी गई, सो देयर इज अ पेनल्टी। इनफैक्ट अजय परसों एक जजमेंट ही आया जो इसी का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉम्बे वापी का,
कि गाड़ी खराब हो गई, nobody, the driver was not able to connect with the owner or the customer also did not know, और 4 घंटे डिले हो गई थी ई-वे बिल एक्सटेंड करने में, and he was penalized. But High Court has given a judgment कि भाई there was no intention to evade tax. Absolutely. So this is wrong. लेकिन एक बार आप ये सोचिए कि जजमेंट आने में 2-3 साल लग जाते हैं, एंड पेनल्टीज इन लैक्स, 20 लाख 25 लाख की पेनल्टी होती है. आपका फ्रेट रेट कितना है? छोटा ट्रांसपोर्टर, आप ये विश्वास करो, बिल्कुल खत्म हो जाता है. इमेजिन कस्टमर विल डिडक्ट 25 lakhs, और जब तक ये आपका ये नहीं आएगा, जजमेंट नहीं आएगा, इनफैक्ट आप अगर कोर्ट में चले गए तो 2-4-5 लाख रुपए तो आपके वही ऊपर से खर्चा उसमें हो जाते हैं. तो ये इतनी सारी गलतियां हैं, हमने सारा समझाया भी. फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट कार्गो जो आ रहा है, इट इज ऑल ड्यूटी पेड, आप बाहर ही नहीं निकाल सकते हो. देयर इज अ रीजन फॉर ई-चालान फॉर दैट. एग्जैक्टली. सॉरी, ई-वे बिल फॉर दैट. या आप जितनी सरकारी कर्म जो काम कर रहे हो, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, डू यू थिंक दे विल इवेड टैक्स? नो वे. Yes. We have tried to convince and they were agreed कि हाँ भाई बात आप सही कर रहे हो, and we will definitely look into it. So we will try to, नवरत्न है आपके, सॉरी, ये जितनी आपकी 5-star ट्रेडिंग वाले एक्सपोर्ट हाउसेज जो हैं, उनको भी सरकार ने एक अलग छूट दे रखी है. भाई ओके, वी फील दैट इंटेंशन, ये ऐसा काम नहीं करेगा. वो कंपनी को हमने कहा भाई आप ये कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मे बी यू कैन गिव सम काइंड ऑफ अ रिलीफ, या वो है, या आप जो ई-वे बिल के जो प्रावधान है थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दीजिए. वैसे डाइल्यूट के, ठीक है, अगर गलती है, या तो जो आपने स्पॉट पे पूरा पेनल्टी करना शुरू कर दिया, भाई जब तक आप पैसे नहीं भरोगे आप आगे नहीं जा सकते हो. तो आपके पास कस्टमर का नाम पता सब कुछ है, गिव देम अ चांस टू प्रूव दैट दे वर नॉट रॉन्ग. जब जजमेंट्स हमारे पास ऐसे आ गए, भाई इवेशन का अगर कोई स्कोप नहीं था, इट वॉज टेक्निकल प्रॉब्लम, सो लेट देम एटलीस्ट एक्सप्लेन दैट. ये नहीं हो रहा है, आप सीधा पहले आपको बोल रहे हैं आप पहले पैसे भरो एंड देन यू अप्रोच द कोर्ट. हम गोली पहले मारेंगे, पहले गोली मारेंगे, उसके बाद क्या गलती की. ये हो रहा है सारा. Actually, from an industry point of view, on the whole, how is the industry faring currently? Because मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे कि मार्जिन तो ख़त्म ही हो चुका है, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट वर्थ बीइंग इन एनी मोर. बट स्टिल हम देश की बोलते हैं ना, वी आर द मूवर्स ऑफ द इकोनॉमी. हाउ रेलिवेंट आर वी एंड हाउ प्रॉफिटेबल आर वी? If we say that we are the second largest industry for employment after agriculture, we are in the first industry. तो word use करना पड़ रहा है, you are right, but आप ये मान के चलो कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार हमारे ट्रेड्स की वजह से मिल रहा है. तो योगदान तो आप समझ ही सकते हो. अगर हम ये कहें ऑलमोस्ट 65% ऑफ द मूवमेंट स्टिल बाय रोड, तो हमारा योगदान तो बहुत बड़ा है. ओनली प्रॉब्लम इज फ्रेगमेंटेशन, कि छोटे प्लेयर बहुत हैं इसमें. 85% आर स्टिल प्लेयर्स जो 1 से लेके 5 ट्रक वाले हैं. अब जो हालात चल रहे हैं, आई एम अफ्रेड कि ये छोटे प्लेयर्स वाइप आउट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री. ऐसा मेरा मानना है कि 10 करोड़ लोगों को अगर आपको रोजगार दे रहे हो, और अगर आप फिर से वो कि मोनोपोली अगर हो गई, बड़े बड़े प्लेयर्स अगर रह गए, तो इन बेचारों को क्या होगा. ये हुआ भी क्यों, ये मैं आपको बता दूं. एक तो कंपटीशन क्यों बढ़ गया. पिछले 5 साल में अगर मैं सिर्फ टोल की बात करूं, टोल हैज़ गॉन अप बाय 7.5%. 1.5% टोल आपका फ्रेट का हर साल बढ़ता ही बढ़ता है गवर्नमेंट कंसेशन के हिसाब से. पिछले 5 साल में आई हैव नॉट सीन अ सिंगल रुपी इंक्रीमेंट इन फ्रेट रेट्स. तो आपका कॉस्ट बढ़ गया और फ्रेट रेट्स वहीं के वहीं हैं. रीज़न बीइंग द डिफरेंस बिटवीन आरसीएम एंड एफसीएम. जो हम बात करते हैं भाई इनपुट क्रेडिट, जो बिगर प्लेयर्स हैं वो इनपुट क्रेडिट ले पा रहे हैं, स्मॉलर प्लेयर्स नहीं ले पा रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स ने इनपुट क्रेडिट को अपना प्रॉफिट समझना शुरू कर दिया है. ये एक बहुत बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी गलती हुई है. मतलब मैं सरकार का भी, मैं आई एम सरप्राइज कि सरकार ने एक ही इंडस्ट्री में ये 2 रूल्स कैसे लागू करने दिए. दैट वाज आवर डिमांड आई थिंक, बट इट वाज रॉन्ग. अगर था, मान लीजिए जिन्होंने भी किया था, मान लीजिए मैं तो उस मे बी आई वाज नॉट देयर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज द क्रक्स जो आपने पूछा कि भाई ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है. अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो, देखिए फ्रेट जो आरसीएम है वो भी वही ट्रक, मतलब वही माल बॉम्बे से दिल्ली ले जा रहा है, माल मैं भी ले जा रहा हूँ, बट लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. तो ये इस वजह से छोटे प्लेयर्स बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं और मार्जिन्स इतने ज़्यादा श्रिंक हो गए. तो मुझे नहीं लग रहा है अब कोई नए प्लेयर जो नए हैं इस साल, मेरा ऐसा मानना है द नंबर ऑफ व्हीकल्स विच विल कम ऑन, न्यू व्हीकल्स कम ऑन द रोड विल बी लोअर देन द लास्ट ईयर. बट सरप्राइजिंगली लास्ट 5-6 महीने से अगर ट्रक सेल्स हम देखें, दे बीन ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ. बट हाँ, अब वो क्या हुआ था, अगर आप दिवाली का एक पीरियड देखो,
गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हम जीएसटी कट करने वाले हैं। हाँ। सो फिर दिवाली से 1.5 महीने पहले तक सारा प्रोडक्शन सब कुछ बिल्कुल रुक गया था। Right. देयर वाज नो दिस थिंग, भाई सारे ये सोच रहे थे भाई जीएसटी कट होगा तब लेंगे। सो जब दिवाली का पीक सीजन आया तब ट्रक्स की हैवी डिमांड हो गई थी। फ्रेट रेट्स शॉर्ट बाय 30%। स्मॉलर प्लेयर्स के लिए एक बेनिफिट ये होता है भाई जीएसटी कट हो गया, 28 का 18 हो गया, तो फॉर देम देयर कैपेक्स केम डाउन। राइट। तो अचानक ही लोगों को लगने लगा भाई हम पैसे कमा लेंगे, फ्रेट रेट्स वेंट अप फ्रॉम 1 लाख टू 130। तो उस पीरियड में फिर जो लोगों ने खरीदना शुरू किया, बट अगेन आई थिंक इन फेब द रेट्स हैव कम डाउन अगेन। बट सेल्स, ट्रक सेल्स आर ट्रक सेल्स का थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि बट ये अब जो ट्रक सेल्स हैं शायद छोटे प्लेयर ने ज़्यादा ली है। अगर आप वो कॉन्फ़िगरेशन देखो, बट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर आप देखो तो इंफ्रा में बहुत ज़्यादा इंफ्रा में, बिकॉज इंफ्रा मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इंफ्रा का ही है, इंफ्रा का ही मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सेल देख भी रहे हो कमर्शियल वेहिकल तो दैट वुड बी इंफ्रा पे गवर्नमेंट स्पेंड काफ़ी कर रही है। और वो फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के होते हैं जनरली, तो वो एक फिर भी एक स्टेबल वो है। अदरवाइज फॉर कमर्शियल व्हीकल्स हु डू लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लगता है इतना कोई बेनिफिट आने वाला है, या इतनी ट्रक बिकेंगे जो पहले बिक रहे थे। बट वो रिप्लेसमेंट साइकिल के चक्कर में भी काफ़ी वॉल्यूम वहाँ पे भी आ रहा है। हाँ, प्लस उसमें ये भी हो रहा है कि पहले जो 16 टन की ट्रक थी अब वो 40 टन या 35 टन वाली ट्रक में कन्वर्ट होती जा रही है। तो उसके बाद सप्लाई स्टिल अगेन हायर देन द डिमांड, कि 16 टन की ट्रक आपने 16 टन की डिस्कार्ड किया, आपने 40 टन की ली, तो इनफैक्ट यू हैव रिप्लेस 3 ट्रक्स विद वन। तो इस हिसाब से सप्लाई आज भी ज़्यादा ही है कंपेयर टू द डिमांड। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी टेक सेवी, यू हैव टू बी टोटली ऑन योर टोज। अगर 24/7 आप नहीं करोगे, आप फ्लीट में पैसे नहीं कमा सकते। बट एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी ऑफ ट्रक्स, आज आप भी एक फ्लीट ओनर हो, हमारा ट्रक फिर भी वही 7,500-8 हज़ार किलोमीटर पर मंथ चलता है। जब हम कितने भी बोले हमारे पास रोड अच्छे हो गए, ट्रक्स अच्छे होंगे, वेर एज एट द सेम टाइम जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं दे आर रनिंग 14-15,000 अ मंथ, सेम ट्रक, सेम रोड, एवरीथिंग सेम। कहाँ है गैप ये, एंड हाउ डू वी ब्रिज दिस गैप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई मीन इसमें मैं चाह रहा हूँ सरकार थोड़ी हमारी मदद करे। ई कॉमर्स इज रनिंग ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट दिस थिंग, ये हब एंड स्पोक मॉडल है। Absolutely. गाड़ी जाते ही विद इन 2-3 आवर्स दे ऑफलोड इट, बट दिस इज नॉट द केस विद द अदर कंपनीज। आई वुड से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके जो वेयर हाउसेज हैं। आई एम सरप्राइज, आज AI का ज़माना है, एवरीथिंग इज यू कैन प्रेडिक्ट कि भाई मेरे पास इतनी स्पेस होने वाली है, इतने ट्रक पहुंचने वाले हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो पुश एंड पुल वाला काम चल रहा है। भाई सेल्स पुश बोलता है जी आप माल भेज दो, वहाँ उनको पता है कि ट्रक खाली करने के लिए 2 ट्रक के लिए भी स्पेस नहीं है, और आपके 20 ट्रक वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। एंड द ट्रक्स आर डिटेन फॉर 5, 7, 10 डेज। आपने एफिशिएंसी तो बढ़ा दी, ठीक है, आप 5,000 की जगह 7,500 किलोमीटर चलने लगे, बट इस वजह से अगेन यू गेट बैक टू द ओल्ड दिस थिंग, जो डिटेंशन हो रही है विच इज़ वेरी हाई। एंड द मेन थिंग इज डिटेंशन, आपको पीनट्स मिलती है। आज एक ट्रक, कोई भी एक ट्रक ले लो आप, 40 लाख से नीचे आपको नहीं पड़ रहा। मिनिमम पर डे अगर आप गिनेंगे तो 4,000 इज योर मिनिमम कॉस्ट ऑफ आइडल, फिक्स कॉस्ट ऑफ आइडल ट्रक। राइट। और आपको पैसे क्या मिल रहे हैं आप जानते ही हो। अगर वो भी मिला तो वो भी मिलता ही नहीं है आपको। 24 आवर्स तो फर्स्ट 24 आवर्स तो यूर अलाउड फ्री दिस थिंग। संडे का नहीं मिलेगा, आप सैटरडे पहुंच गए तो गलती से संडे है तो वो नहीं दे रहे। वो सब चीज़ों को करके मतलब ऑलमोस्ट अगर आप 6 दिन डिटेंशन हो रही है तो आपको मुश्किल से 3 दिन मिलती है, वो भी मतलब नॉट हाफ ऑफ व्हाट एक्चुअल कॉस्ट इज। अगर मैं इसका कंपैरिजन शिपिंग लाइन के कंटेनर से करूँ, एक शिपिंग लाइन कंटेनर की कॉस्ट होती है 4 लाख रुपये। फ्री टाइम के बाद इफ़ यू डिले द कंटेनर दे चार्ज यू 12,000 रुपीज़ पर डे। तो एंड असेट कॉस्ट 4 लाख और वर्सेस 40 लाख। एग्जैक्टली। तो यही है कि जो फ्रेगमेंटेड नेचर या जो हम ऑप्रेस्ड हैं ना, वे मैंने कॉल ऑप्रेस्ड बिकॉज जो 85% जो ट्रांसपोर्टर्स हैं बेचारे 8वीं 10वीं फेल या उस तरीके के लोग हैं जो अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं सकते सरकार तक। उस वजह से ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है। डू यू थिंक टू गेट दीज थिंग्स राइट वी नीड टू अप्रोच द गवर्नमेंट एज वन इंडस्ट्री, वन वॉइस, जो हो नहीं पा रहा है कई सालों से? ये बिल्कुल सही है। इट हैज़ टू बी वन सिंगल एसी। इनफैक्ट जैसे हमने अभी, मैं अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा हूँ, इट वाज अ गुड, वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ 40 एसोसिएशन एक साथ आई, और उसमें फिर होना ये चाहिए कि देयर शुड बी जस्ट 2 or 3 पर्सन्स हु शुड बी कम्युनिकेटिंग विद द गवर्नमेंट। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बस वाले की थोड़ी प्रॉब्लम मान लीजिए, या ट्रक वालों की या ऑटो वालों की, तो देयर विल जस्ट 2 or 3 स्पीकर्स होने चाहिए, जस्ट 2 or 3 स्पीकर्स।
तो ये बात एकदम सही ढंग से सरकार तक पहुंचेगी। एंड विद गुड होमवर्क, जो बैकएंड शुड बी डेटा पूरा उनका होना चाहिए कि भाई जैसे 4,000 करोड़ का चालान का हमारे पास था, किस किस पे हुआ हमारे पास, इनफैक्ट वो भी डेटा था, स्कूटर्स कितने थे, मोटरसाइकिल कितने थे, हर एक डेटा उनके पास था। सो सम ऑफ द एसोसिएशन आर वेरी गुड इन दैट। सो वी शुड लीव असाइड आवर ओन पर्सनल ईगोज कि भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो और मुझे आगे की स्पेस मतलब सीट मिलनी चाहिए। वी शुड गिव chance to the people who have done their homework well and they should speak. आप पीछे बैठो मतलब as a support and they should be able to talk to the government. तो अब शायद कुछ इसमें बात बढ़ सकती है। Ashok ji, finally, as a fleet owner, as a transporter, how do you see the future of the industry and your company on the whole? Only those who are efficient, those who use technology to the best, they will survive. Otherwise, this industry is going to get worse and worse. तो मुझे डर बस यही लग रहा है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। सो विच रियली एक्चुअली पेन्स मी बिकॉज द लाइवलीहुड ऑफ लॉट ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन दिस ट्रेड। सो समथिंग नीड्स टू बी डन, यूनिफॉर्मिटी लानी ही पड़ेगी। अदरवाइज द वे थिंग्स आर, आई थिंक बहुत लोग अगले नेक्स्ट 2 years विल सी अ लॉट ऑफ पीपल डिफॉल्टिंग ऑन देयर इंस्टॉलमेंट्स, गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। दिस इज व्हाट आई फील राइट नाउ। Only the efficient and those who are, I would say, have leveraged their debt properly, only they will survive. अगर आपने debt बहुत ज़्यादा ले रखा है, आप नहीं survive करोगे इसमें। Thank you, Ashok ji. On the other side of this very short break, we talk to Harsh Kotak, who represents the passenger segment, and their concerns are equally alarming as the cargo segment. We will be right back. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है। उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है। इनके बीच एक लॉयर भी है। और एक डिजाइनर भी जा रही है, क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। अरे लाओ पकड़ाते भाई। आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है, क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं। और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions. With E-Challans becoming a menace across India, we speak to two representatives of the cargo and passenger segment. Let's see what are the pain points of the passenger segment, and talking to us is Harsh Kotak, the president of Mumbai Bus Malik Sangatana MMR region, vice president of Federation of Tourist Taxi Operators, and the treasurer of Bus and Car Operators Confederation of India. So Harsh, to start with, tell us
E-Challan को लेके इतना हल्ला हो रखा है कि E-Challan has become a menace, it's a problem. What are the actual difficulties with E-Challan? मैं थोड़ा सा पहले हिस्ट्री बता देता हूँ. E-Challan ये हमारी डिमांड थी. Okay. आज भी we are not against the system of E-Challan. We are against the way it is implemented. Right. So what is more important here is to understand the fact. लोगों को ये लगता है कि हम E-Challan सिस्टम को विरोध कर रहे हैं. We are not even opposing the system at all. Okay. It has to be E-Challan. Why? Because it is the best tool to eradicate corruption. Right. I mean, that's what we felt then. That was the intention even when it started. Correct. Now the problem here is the law got passed in the year 2020. Okay. Implementation started in 2017. Right. So from 17 till 20, there was a no man's land, no regulation, but the implementation started. Okay. So there was no regulation or no regulatory authority. Till date, it's not there. So 17 to 20, those challans are absolutely illegal. Okay. I mean, they are not supposed to be there, Right. but still they are there. Okay. Now from 20 till 26, now we are in 2026, we had a system in place under section 167. It is properly defined how it is supposed to be done, Okay. what all supposed to be done. Nothing of it is happening. I mean, the entire process you mean to say is The there. complete process is digitalized. I mean, it's written. Right. Every step, what is to be done after X, Y, Z. It very clearly says no human intervention. Right. Now you see in the roads, wherever there is a handheld machine. Now this handheld machine is not supposed to be there in existence. Okay. Now the state buys those handheld machines, starts using it. One step ahead. Now they started clicking photographs on the mobile. Mobile phones, yes. Now they click the photographs. Now what happens is everybody is given one target. Can you imagine? अगर मेरे यहाँ पे in my country, in my city, अगर if there is pickpocketing, does the police give a target that okay, you have to catch hold of 20 pickpockets immaterial of even if they don't pickpockets? Absolutely. So now here there is a target system. So they are saying that every constable has a target. You have to achieve 30 E-Challans a day. Now what he does, because it's impossible, because I mean, you cannot continuously going on doing Correct. this. What he does is one of them clicks one photograph on his mobile and circulates on their WhatsApp group. Oh. So today the constable challenged me at Kandivali for that. The other day he challenged me at Dadar for that. They don't even recognize the fact these buses also travel out of Mumbai. I have proof where the vehicle is in Indore and the challan is generated here. I mean, that's happened with trucks also. And very often. And very Absolutely. often. So now people know that. Now, as per the mandate, the longitude, latitude, timing, everything is supposed to be there on that photograph. Correct. In the handheld device, it's not supposed to be there. It is supposed to be electronic device which should capture on its own. Right. That is not happening. One more bigger fraud. I'm talking about Mumbai, Pune. Mumbai, Pune, they have a system. They've got those cameras installed. Right. And that activity is absolutely privatized. Now privatized to an extent where every E-Challan raised by the private company, he gets 650 rupees each challan. Okay. Now for buying the whole infrastructure, that company has already been paid. After paying that company, now for execution, every E-Challan generated, that company gets 650 rupees. So where is the safety? Where is the law and order? Right. All the companies interested in is in generating E-Challans. E-Challans, absolutely. So they have left, right and center executed with E-Challans. Every operator operating between Mumbai, Pune, and now the same thing is in for Samruddhi Highway. Can somebody give me figures that road accidents per se have come down? Absolutely They'll give not. some rough, vague figures. So after implementation of whatever you are saying, no accidents have gone down. Correct. Nothing has gone down for that. Absolutely. Only thing that has happened is you have raised challans worth 4,500 crores, which are still pending. Which are So still you must have pending, yes. raised so many. So many more, yes. So what are we looking at? Is this a revenue model or a safety and a discipline method? I mean, what was supposed to be a safety model has now become a revenue model. Actually. Absolutely. Now the system, how it is supposed to work. One E-Challan is generated. That E-Challan, within 15 days, he is supposed to give you a notice Right. that this E-Challan is generated. After you generate the E-Challan, he is supposed to send that E-Challan to the court. Okay.
If he doesn't send within 90 days, the mandate says so, that he is supposed to send the E-Challan to the court within 90 days. Right. If he doesn't send, it is null and void. Okay. Have they nullified any of them till date? Nothing at all. Post this, there is one more law, because this is under Criminal Procedure Act. Now, Bharatiya Nyaya Sanhita 483 says, if within 6 months, the court is not moved, still that holds irrelevant. So, my challan, if not sent till 90 days, it is nullified. Right. If not acted upon by court till 180 days, again nullified. Right. Nothing of this is happening. They are asking me to pay challans which are like 5 years old. Now, today the system remains, once the E-Challan is generated, there is, after 2 years of fighting, they have come out with one more click, which is grievances. Okay. So, 98% of the grievances are turned down. Now, why? Because even that's an outsourced activity. There are instances where a bus driver is being challaned for not wearing a helmet. Now we file the grievance and it says whatever action taken by my officer on duty is correct. Can you imagine? So this is one. Secondly, there is no further step besides this grievance. Once it is turned down, all I am supposed to do is pay. Pay. Right. Now, Indian constitution allows me to approach the judiciary because, see, enforcement agency cannot be a judiciary. Correct. Enforcement agency feels that I have done something wrong. I have committed offense. With proof, he is supposed to send that challan to the judiciary. Right. Then it is for the judiciary to decide. Yes. So today they are not even doing that. So I am deprived of the judiciary at all. I mean, I cannot even approach them because there is no way I can go to them. So if they are going to treat the E-Challan system in this manner, then what are we looking at? Are we looking at safety security? No. What are we looking at? So if you know, we've just undergone one agitation where under action committee, Maharashtra Transporters Action Committee. Now we are trying to show to the government that what all is happening wrong. But unfortunately, as you know, they are not even in a mood to listen to us. Yes. For the CM to listen to me, I have to gather my 5,000 people in Azad Maidan and then pressurize them. And in turn what they say is that, okay, let the assembly session get over, I'll meet you after 23rd. But what exactly is your demand? What are you asking from the government? Or what do you want from the government? That's the point here. I am asking the government to follow the due procedure of law. Which is already written. Which is already there. Yes. So there's nothing new that they have to create here. So now my point here is, who drafted or prepared the law? They. The government prepared it. Correct. We are not in the picture. Right. After you have drafted and proposed and implemented a law, whatever is written in the law, you will not even follow that. Today, if somebody asks me, what am I asking for? I'll repeat myself. I have asked them to follow the law prescribed by them. It's not rocket science. No, absolutely not. So now if they don't even want to do that, now thirdly, what I'm saying is, there are supposed to be 3 photographs. Right. Each challan, you're supposed to have 3 photographs. These photographs under the Indian Evidence Act, they are supposed to convince the judiciary that this act was committed. Right. The violation was there. Correct. So if my offense is not proved by the evidence, then is there a commitment of any... Right. Now here, even if I murder somebody, it is to be proven. Before that, not guilty. Not guilty. Now what is happening is, when there is a E-Challan pending, and if I really force them to send it to the judiciary, still that vehicle is under blacklisting. Right. Now this novel idea of blacklisting came from where, nobody knows. But today, if blacklisted, if any E-Challan is pending, now they are saying that we will not do pollution certificate. We will not do your fitness, which is against the law, but this is what is being enforced. I don't know how and why. Recently, you must have read that the DG, Director General of Maharashtra, came out with a circular asking the police not to forcefully collect. You must have read it. Yes. Now, not to collect forcefully, this is the 3rd circular which has come in. And it doesn't stop. On ground, things are the same. Absolutely the same.
Now one more step has come in. They stop you, and if at all you argue with them that there's a circular, you cannot forcefully collect. He'll say, okay, either you pay or I'm clicking one more photograph. And if they click one more photograph, I have nowhere to go. All I can do is make payment. So this is where I am. But I was surprised when one of the lines in the circular said, "Do not harass the drivers." I mean, do they really follow that? Not harass the driver. But then in terms of the bus operators, what are their typical difficulties that they face on road? See, I mean, it starts with the basics. The law mandates them to provide me with the infrastructure. Right. The same law book which entails them to book me and issue E-Challans, the same book also speaks about they providing me with the infrastructure. Absolutely. In a city like, say, let's talk about Mumbai. MMR region has got 4 crore people staying. I say, strictly talking about buses, we've got 40,000 buses in MMR region. They are not providing us with parking, which is mandatory requirement as per law. Okay. Not free, but yes, they have to provide us with parking. Right. Not providing. They have to provide me with pickup and dropping points en route. Yes. For school buses, for employee transport buses, for daily bus services which are moving between city A to B. Right. All these vehicles which are moving within the city or out of the city, you're supposed to give me pickup and dropping points. Right. You're not giving me that. 70% of the E-Challans issued within the city are either saying that it's obstructing to the traffic or it is saying wrongly picking up, wrongly dropping people. Now, what do you expect a school bus to do? And when there is a no right pickup place, how can you have a wrong pickup place? But that's the point here. Under the infrastructure, under that law, yes, you're supposed to give me parking space. You're supposed to give me pickup and dropping space. And you're supposed to put a pole there. Right. That this is the pickup space. Right. Now, for the employee transport, the same issue. For school buses, same issue. For every night services or what you call daily bus services, same issue. How do we function? Absolutely. Same goes with truckers. Yeah, I mean, the basic issues are more or less the same. But apart from E-Challans, what are the other problems that the bus operators are facing? The infrastructure, of course, is one of them. It is very, very peculiar. We have been given this new mandate that whatever additions, the retrofitments are supposed to be done by exterior agencies. Right. Now I'm buying a vehicle from Tata, Leyland, Eicher, or these 5 of them. I buy the vehicle, post which the government feels that no, there is one more retrofitment which need to be done for safety. Now under this guise of safety, they come out with, because our minister travels to some foreign country and he sees some fancy gadget there. Yeah, and then he'll say, okay, this has to come to India. Yeah. Now look at the topography, look at the conditions. Absolutely. Can it even happen? We got 150 crore people staying. Right. City of Mumbai, which cannot even handle 60 lakh people, we got 1.5 crore people staying. Right. Now we have to somehow manage here. Now he wants these gadgets to come in. Can you believe? In the year 2017, we came out with that panic button. Yes. Till before last year, that panic button, when you press the panic button, it would not go to any agencies. It would create panic for me only because that SMS would come to me. Right. That somebody has pressed the panic button. What am I going to do to it? Even if there was something really untoward happening, how am I going to control it? Exactly. Now today, they've come out with, because we represented in the center, they come out with this novel idea. They've put up a call center. The moment somebody presses the panic button, it goes to the call center. Now what does this call center do? They call me. It should go to the law enforcing agency. Absolutely. I mean, so again, this law mandated that once the panic button is pressed, the nearest police station or the nearest law enforcement agency would get an alert and they would intercept that vehicle and help. And that is the effective way to do it. So now if I'm a person who is under trouble, under stress, I need help. I press the panic button. So actually it is a cheating button. It's not panic button. Actually, yes. I am under panic, I press it, nobody comes to me. Right. And I am under the false hope that Somebody I'm going to will get some help, which never comes. So how do you see this? And it has been implemented since last 10 years.
Now they come out with some gadget for fire extinguishing. Now, believe me, whatever they've come out with is, once the vehicle catches fire, then has anybody even thought it should not catch fire? So for that, what do we do? Yes. So they're talking about fire retardant. They're talking about those sprinklers. Right. All this comes into action when? Once the vehicle catches fire. Why not stop the cause itself? So has anybody even till date thought about why is it catching fire? How do we stop it? Nobody talks about it. So if somebody asks me, I am into this since last 40 years. Somebody asks me, what is the problem with, why is it catching fires? These are our basic questions. Right. Nobody answers it. But Euro 6 vehicles, statistics would show. The moment we entered into the era of Euro 6, these fire incidents have gone out of hand. Okay. Now look at the number of vehicles catching fire. The vehicle is getting heated to an extent where everything is under threat, but nobody is looking at it. Now this new sprinkler where I am adding AdBlue, so it's called DAF. Now that DAF is supposed to sprinkle on my smoke and then it is supposed to. Right. Now this whole system, I can show you 50 examples where it heats up to an extent where the whole area becomes more than 100 degrees. My goodness. So that area is prone to catching fire. Catching fire, absolutely. Now there are wires going. Euro 6 vehicles are completely sensors. Right. It is all wiring. All the wiring are passing from around this area. And it is prone to catching fires. Now you are saying that don't use, even if I use fire retardant material, it is still going to catch fire. Yes. So we are headed to some retrofitment which has got absolutely nothing to do. So that is one problem. Now look at the other problem. They are asking me to fit all this. Now fit from whom? Fit from the agencies who are, of course, if I talk about India, anything to do with automobile, they should be enrolled or passed by or certified by ARAI, CIRT, these agencies. Correct. Here it is unique. These agencies would certify them, but then the Transport Commissioner's office will recertify them. Now, when I ask them why you do this, they're saying that we are looking at parties who would not run away. They sell you the product and run away. In the last 5 years, I'll show you every party, whoever has supplied me whatever, has run away. And they've done nothing about it. So you talk about VLTS, people have sold machines to me and ran away. They sold me GPS, they've ran away. They've speed governors, they sold, ran away. Then what did you do about it? Nothing. So this is one, again, retrofitment. My demand remains, anything to be retrofitted, it has to be routed only through the manufacturer. The OEM should be the right person for that. Absolutely. So, if you ask me one-time cost is no matter. But I can pay for it, but then the responsibility should lie with the manufacturer who has sold me that vehicle. Right. And the government, as an afterthought, thought that, okay, these retrofitment could give a better safety, which absolutely doesn't. But even if there's a thought, it should be routed through the manufacturer, no? Right. I am looking at those fly-by-night operators who would sell it to me at they sell it to me at an astronomical, to give you an example, that VLTS device, Goa, they sell it for 8,500. Maharashtra, they sell it for 14,000 rupees. The same thing. Same, company is also same. And they talk about under-end transaction in Maharashtra, so that's how it is costly. My goodness. So you are asking me for retrofitments, which is absolutely out of this world. Now, you don't give me infrastructure. You ask me to do retrofitments. You are coming out with, every day there is something new coming into my industry. Absolutely. Now, how do you even cope up with this? That's become a challenge now. Now, yesterday you must have seen a group of bus bodybuilders going to meet Gadkari along with Rahul Gandhi. Now, if you hear their discussion, you really feel where is the government going and what kind of thought process they've come out with. Really out of this world. But let me have, from a bus operator point of view, you've been in this industry for a long time. Your costs have gone up considerably, especially last 10 years, right from vehicle to toll tax to everything. How are the margins currently? Is bus operation still a profitable business? I would not deny it if it was not a profitable business.
In Maharashtra, we got 100,000, 1 lakh buses, private buses. So there is a scope. Right. And I can very proudly say that in the last 40 years, whatever I am today is thanks to my industry. Yes, the margins have decreased to an extent. Right. Now it is economies of scale which works. Margins are wafer thin. So, today if I am asked, what is the future of bus industry? I would say very bright. Mm-hmm. Okay. And I have hopes because those who are super learned, IIM, IIT, even those people are entering my business. Right. So I'm sure there's something in it which they are seeing. Yes. If they don't see any of it, I'm sure they'll run away. So they are coming into the market. What is expected from government on this? They should act as a regulatory authority. Now, we all have seen about TRAI for telephones, yes, for communication. Even for airports, we have seen about Airport Authority of India. Right. So why can't we have Transport or Passenger Transport Authority of India who would control and let the private players play? Yes, let them do their work. So now here what is happening is the government is trying to do business themselves. Correct. Imagine MSRTC has accrued losses of 10,000 crore rupees today. And they've got just 13,000 or 14,000 vehicles on road. Mm-hmm. Vis-a-vis my private bus industry, we have crossed 1 lakh. Last figure would be 1,20,000. Right. So that is 10 times the figure there. Yes. MSRTC, you have given them all possible. They've been given bus stops, yes, pickup dropping points. They've got parking spaces, depots, everything is given to us. They are paying lesser taxes than me. They would pay taxes only when they do business. I do business or I don't, I have to pay advance tax. After paying advance tax, for usage of road, I am paying toll tax. Correct. On fuel, you would appreciate the kind of cess for road cess. Yes. So that is, I guess, 4 rupees per liter. So the quantum is huge. Despite of that, the state also collects road tax. Road tax, yes. So I am also supposed to pay that tax. Now I am paying all these possible taxes, against which what are you giving me? Absolutely nothing. Even the basics are missing. That's the point. Does the passenger segment also face driver shortage, which is a very common occurrence for trucks? Absolutely yes. Previously what would happen is, the driver, to become a driver, how the journey would start? He would come on my vehicle as a conductor. Right. He would clean the vehicles. He would do some mechanical work. And then gradually he will become a driver. Now nobody aspires to become a driver. Now why? Because on road you see, there are zero facilities. From Mumbai to Pune, if somebody has to go, this is a very shorter route. Let us talk about some longer route. Say if I want to run a vehicle from Mumbai to Delhi. Yes. Where does the driver sleep? What en route amenities you have? It is absolutely zero. So today what is happening is, nobody aspires to become a driver. Because firstly, do you even say that, can somebody really be proud of saying that, okay, I am a driver? He'll be looked down upon. That social stigma is there. Same as with the transporter. When in whichever forum possible, I'll say I'm a transporter. I'll be like, oh, okay. And so driver is also looked down upon. So अगर ये उसको status कुछ नहीं है, salaries no doubt they've come up, but it's not as huge as what should have gone to. Okay. That is also not there. Now people don't even aspire. लोग बोलते हैं it's better I go to some mall, do a job worth 10,000-12,000 rupees. Correct. And not become a driver. Because on the roads, when the police stop you, some roadside gundas stop you. So you have got zero. What is your value as a driver? Nothing. Looked down upon. And the amenity is not there, facility is not there. So why would somebody become a driver? No. Absolutely. As a matter of fact, you must have seen one more legislation being passed saying that the truckers or the heavy vehicles need not necessarily have a conductor. Cleaner, yes. Why so? Because you don't get people to come. Actually, you don't. So now if that supply line is cut off, we don't get conductors or cleaners. The cleaners would ideally transform into a driver. Yes. So that is gone. Now one more problem. Ideally, I can make this statement. Whole of India runs on ideally 2 or 3 states for labor. Right. Now those laborers come from states like Bihar and UP.
Now, previously you would get a license, you would get a bus badge. Now, buses, unlike truckers, we also need to have a bus badge. Right. Public service vehicle. Correct. So now for a bus badge, there are some laws which says that you need to be a domicile of Maharashtra. Now that gentleman has come from someplace. Now a few states have done away with the requirement of bus badge. Right. Now their state, they don't have a bus badge system. Their license belongs to UP, Bihar, whichever. Wherever, yes. When they come here, they are not supposed to drive the vehicle unless they have a bus badge. And they can't get a bus badge because they don't have a domicile. They don't have a domicile. Now people staying here don't really aspire to do driver's job. Obviously. So this is a catch situation where you don't want, one side the government is saying that we have got unemployment. Exactly. Other side the industry is struggling to have manpower. Yes. So now how do we make these ends meet? I mean, that bridge is really missing there. Absolutely. Finally, Harsh, the infrastructure has grown over the last few years. Buses have become high-tech, more comfortable. How do you see the future of the passenger segment, and do you see more people now coming onto buses? Thanks to the government, you see the roads coming in. Yes. The road infrastructure, of course, by payment of tolls, but it's coming in It's a very there. big way. So now I can ask for lot many things. If where railway passes through 5 states, the railway is not supposed to pay taxes for 5 states, but I am supposed to be doing that. So if I don't get down from your whichever golden quadrilateral or the highways B, why should I be paying the tax for that particular tax? Because I am already paying toll for this road use. Correct. I am not using the state's infrastructure in any manner. Yes. So that long haulage would really boom. Now they came out with the AITP. Now AITP also there are so many hindrances coming in. So I see if I have to start a Mumbai to Delhi, which I would not even dream of, now I can dream of doing it. And passengers, see, world over, we got the best or the huge population. So customer demand is always going to remain. Right. You see aircrafts, it has a limit of 5 lakh. Today we have reached 5 lakhs and the aircraft industry is really proud of themselves. That they have reached a benchmark of 5 lakh passengers a day. Railways, they have upper limit. Yes. Because the same infrastructure is used for goods and cargo. Now, railways carry at most 7 crore passengers a day. How much my industry carries? 40 crores a day. So, look at the kind of avenues available for my industry to go on. And this 40 crores is not going to stop at 40 crores. Yes, it's going to grow. It's going to grow for sure. So, I would invite the new fresh blood. Please come in. Yes, despite of whatever I said in the last 10 minutes, but there is a silver lining to this. Thank you so much, Harsh. It is clear that while the intent of introducing E-Challans was a noble one, with an aim, but somehow the focus shifted to revenue collection. Every citizen has faced this problem. A picture clicked and a notice sent. By the way, have you checked your pending challans? If not, scan the QR code on your screen and see if the results surprise you. We will be back again next week with another very interesting episode. You have been watching Ashok Leland presents Trans India, Real People, Real Emotions. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind. चलेंगे अपने ताव में तंगलियां छोटे रास्ते अटके न किसी पड़ाव में गली हो बगल की या मीलों दूर के गांव में बेधड़क बेझिझक चलेंगे अपने ताव में चलेंगे अपने ताव में चिलचिलाती धूप हो जितनी हम तो रहेंगे छाँव में चलेंगे अपने ताव में अपने भारी भरकम जो भी हो ना आए किसी दबाव में सड़कें चाहे जितना काटे पड़े न छाले पाँव में बड़ा दोस्त हो राहों में तो चलो अपने ताव में।